Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Vanshika Verma and in this video we will discuss about my third question of my end internal examination question paper on the data science. So the question says explain the concept of linear regression, how the best fit line is determined and write the algorithm for linear regression for given input data points x and y. So first we understand what is linear regression. So, linear regression is a fundamental statistical technique used to model and analyze the relationship between a dependent variable and one or more independent variables. The dependent variables symbolize as y and the independent variables symbolize as x. It is widely used in fields like machine learning, economics, biology, and engineering for prediction and understanding variable relationships. वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करने के लिए भी यूज होता है, प्रिडिक्शन के लिए भी यूज होती है लीनियर रिग्रेशन. इट इज अ टेक्निक. So first we understand the type of first we look at the type of the linear regression. First is simple linear regression which involve one independent variable and one dependent variable modeled by a straight line. Straight line की जो इक्वेशन है वो है y equal to mx plus b. इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. दैट इज वाई दिस इज नोन एज और नेम्ड एज सिंपल लीनियर रिग्रेशन. एम जो होता है वो स्लोप होता है, बी जो होता है वो वाई इंटरसेप्ट होता है. नाउ मल्टीपल लाइन रिग्रेशन. मल्टीपल लाइन रिग्रेशन में मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. सो वाई इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन प्लस बी टू up to the bn xn. Now let's see how the best fit line is determined. So there are various steps to determine the best fit line. So the first step is linear equation in which says the line is expressed by as y equal to mx plus b, in which m is the slope, the rate of change of y with respect to x. कि x के रिस्पेक्ट से y कितना चेंज हो रहा है, किस रेट पे से चेंज हो रहा है, तो वो होता है स्लोप और वो रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे m से. एंड b इज द इंटरसेप्ट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0. जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है, वो होता है b एंड इट इज इंटरसेप्ट. The second step is error measurement. So the error for each data point is the vertical distance between the actual yi and the predicted yi. एक्चुअल y और प्रिडिक्टेड y का जो डिफरेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस डिफरेंस होता है, वो होता है हर डेटा पॉइंट्स का, वो होता है एरर. द नेक्स्ट स्टेप इज कॉस्ट फंक्शन to evaluate the overall performance of the line. The mean is squared. So the goal is to so here is goal is to minimize jmb को कम करना है, मिनिमाइज करना है. ऑप्टिमल पैरामीटर है यहाँ पर m and b. Using calculus or optimization technique, the slope m intercept b that minimize the cost function are determined. So we have a solution here also, which is analytical solution or ordinary least squares. For a data set with endpoints, the slope and intercept can be calculated as. कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले m को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द m. एंड b को इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ये, जहाँ पे x बार y बार है x और y का मीन. अब एल्गोरिदम क्या होती है लीनियर रिग्रेशन की, तो अगर इनपुट है, जैसे इनपुट बोला था एक्स वाई के डेटा पॉइंट जो गिवन होंगे वो उस पे से हमको निकालना है. सो जो डेटा पॉइंट्स है एक्स के, तो वो है x1 x2 अप टू xn, एंड जो y के है वो है x1 y1 y2 अप टू yn. और जो स्टेप है तो वो स्टेप्स क्या है. So the first step is to compute the mean. By this formula, x equal to 1 by n xi summation of n, where I equal to 1, and same for y. This compute the means of x and y. And then to calculate the m. So m को calculate करने का formula है xi minus x bar yi minus yr upon divided by xi minus x bar का whole square. Now to calculate the intercept b, the formula is b equal to y bar minus x m x bar. So b equal to y bar minus mx bar.
So the fourth step is to construct the line equation, and we know the equation for line equation is y equal to mx plus b. The next step is to predict the value, which is optional. न्यू इनपुट फॉर एनी न्यू इनपुट x न्यू y न्यू के लिए फॉर्मूला होगा y न्यू इक्वल टू mx न्यू प्लस b. So these all are the steps or of the algorithm for linear regression for the given point x and y. Now let's see the Python implementation of it. So this is the code for linear regression, which gives us a line of y equal to mx plus b. So in this, first we define a function named linear regression that takes two arguments x and y, which are expected to be list of numbers. N equal to ln x is the is to calculate the number of data point n by getting the length of x list. Now we compute the means y mean and x mean and y mean. Calculates the mean of x value and y value by summing all the value and dividing by the number of data points. Now numerator. So this calculates the numerator of the slope formula by summing the product of the deviation from the mean of each data points. Now denominator, also denominator of the slope formula by summing the square deviation from the mean of each data points. M equal to numerator by denominator. As we know, m is the slope. So slope is result by the dividing and of numerator by the denominator. B equal to y mean minus m into x mean is to calculate the intercept b by subtracting the product of the slope and the mean of x from the mean of y. Now return mb. So this returns the calculated slope and intercept. X 1 2 3 4 5 5 2 4 5 4 5 defines the list of x and values and y values. MB equal to linear regression calls the linear regression function with the x and y list and assign the returned slope and intercept to the variable m and b. Print line equation y prints the equation of line in the format y equal to mx plus b with the slope and intercept rounded to the decimal places. As we see here, the output is y equal to 0.60x plus 2.20. So this means that the best fit line for the given data point has a slope of 0.60 and an intercept of 2.20. We also can say for every increase in y by 1 unit, y increase by 0.60 units, and the line crosses the y-axis at y equal to 2.20. So this is the Python implementation for linear regression, and that's it for this video. Till then, keep smiling, keep exploring. Bye bye.